हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स। इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट बुक इज समथिंग लॉस्ट समथिंग गेन्ड, रिटन बाय हिलारी क्लिंटन। Second is Unleashed, very very important, written by Boris Johnson. He is the former Prime Minister of United Kingdom. Just remember this name, Unleashed. देन कम्स सेव अमेरिका नाम की किताब है, रिटन बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ, हु इज द करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 47th प्रेसिडेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेव अमेरिका। एक कैंपेन भी है इनका, मागा, है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन। ये शायद बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी था, एंड दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज पिचिंग दिस पर्टिकुलर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो अगर इन दोनों में से कोई नाम भी अगर आपके सामने आ जाता है तो जस्ट टेक डोनाल्ड ट्रंप। Freedom. Freedom is a book written by Angela Merkel. She is the previous Chancellor of Germany. So remember, Freedom is Angela Merkel. Then you have Witness. Witness is the autobiography of Sakshi Malik. है ना? She is the wrestler. Everyone knows, Olympian wrestler. Then Crossing the Barrier. It is a book about the Paralympic legends of India. इतना important नहीं है. So this is not that important. This is very important. At the Wheel of Research, an exclusive biography of Dr. Soumya Swaminathan. She is very important figure in the health sector, currently working in World Health Organization. So very very important. At the Wheel of Research, Dr. Soumya Swaminathan. Then comes India at 100, very important book written by Krishnamurthy Subramaniam, former Chief Economic Advisor of Government of India. He is the former Chief Economic Advisor of the Government of India. He has written the book India at 100, very very important. Then Shashi Tharoor, A Wonderland of Words, again important. Knife is book written by Salman Rushdie. He is a very popular author, so Knife is written by him. The Winner's Mindset, शेन वॉटसन, अ क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ठीक है, एवरीवन माइट हैव हर्ड हिज नेम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन जस्ट लीव, बट स्टिल एक क्रिकेटर है, तो दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दिस पर्टिकुलर बुक। Then two books written by Ruskin Bond, Hold on Your Dreams and How to Be Happy. So just remember these two names, Ruskin Bond. Very very important, Source Code, Bill Gates. Bill Gates की autobiography है Source Code. Then I Have the Street, written by K. Ashwin, है ना, K. Ashwin, he is a cricketer. This is very very important, Four Stars of Destiny. It is an autobiography of General Manoj Mukund Narwane. Who is he? He is the former Chief of Army Staff of the Indian Army. और ये क्वेश्चन और ये बुक का नाम कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, रिसेंट के एग्जाम्स में। These two are again very important books written by our foreign minister एस जयशंकर, है ना, ये 2024 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू नेम्स, व्हाई भारत मैटर्स और द इंडिया वे is written by our external affairs minister S. Jayashankar. Gandhi, Life in Three Campaigns is written by M.J. Akbar. Okay, M.J. Akbar. Breaking the Mold. Breaking the Mold is written by Raghuram Rajan, our former RBI governor. Very, very important. Then the last one is Jannayak Karpuri Thakur, Voice of the Voiceless, written by Santosh Singh. Santosh Singh is a very famous print journalist. So he writes a lot of things on Bihar. So he has written the book Jannayak Karpuri Thakur, Santosh Singh. So this was all for this book and author part. I hope you will get directly one question from this particular 5 minutes video in your actual exam. Thank you everyone and best wishes for your exam. We'll meet soon in the next video. That's it. Thank you.